लेट अस डू द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन भी सेम प्रोफाइल का है. द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम. नाउ दिस टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट अ रूम. ठीक है, रूम का हमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दिया हुआ है. दैट इज 5 मीटर. 5 मीटर इज द लेंथ, 4 मीटर इज द ब्रेड्थ and 3 meter is your height. It is given the measurements of your room and we need to find out the cost. Cost of what? Cost of whitewashing the walls of the room and the ceiling at the rate of rupees 7.50 per meter square. In this question we need to whitewash the walls, okay, all the 4 walls and including it this with the top, that means the ceiling part also. इन पे हमें क्या करना है, वाइट वॉश करवाना है. अब वाइट वॉश वाले से जब बात किया तो ही टोल्ड दैट कि जो पर मीटर का स्क्वायर का जो कॉस्ट है, राइट, ऑब्वियस है ये पर मीटर स्क्वायर क्यों दिया, बिकॉज अगर हम किसी सरफेस की बात कर रहे हैं टू वाइट वॉश दी वॉल्स मीन्स व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट देयर व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट दी सरफेस, क्योंकि हम जो वाइट वॉश करेंगे वो तो सरफेस पे ही करेंगे. तो दैट मीन्स वहाँ पे क्या यूज़ होगा, वहाँ पे हमारा एरिया यूज़ होगा. तो दैट मीन्स जो हमारा जिनसे भी हम ये कॉन्ट्रैक्ट देंगे, जिनसे हम ये काम करवाना चाहेंगे, तो वो हमें पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट देगा. तो दैट इज़ व्हाट, रुपीज़ 7.50, राइट. तो अब हमें ये कैलकुलेट करना है इसमें कि अगर उसने हमें पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे दी, इट इज़ लाइक अगेन विद द सेम एग्जांपल कि अगर 1 चॉकलेट का कॉस्ट इतना तो 20 चॉकलेट का कॉस्ट कितना, राइट. तो वही है कि अगर पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट रुपीज़ 7.50 है, तो अब आप अगर आपके पास आपके पूरे रूम का जहाँ जहाँ आपको वाइट वॉश करवाना है, अगर वो टोटल एरिया आपके पास है, तो दैट मीन्स पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल कंप्यूट द टोटल कॉस्ट. तो वही चीज़ करनी है हमें. तो लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट are what, 5 meter, 4 meter, 3 meter I have written here. Now it is quite we have concluded from the question that since we are given the length, breadth and height, that means obvious our room is of what shape, it is of cuboidal shape. So and we have to whitewash what, we have to whitewash the 4 walls and the ceiling. Why 4 walls means we have to consider the lateral surface part and the ceiling means what, the top part of that cuboidal shape room. These are to be considered to whitewashed. So to calculate the total area of whitewashing, what we have to take, we have to take the LSA, that means lateral surface area of the room, that means area of all the 4 walls and the area of the ceiling, that means at the top. Now we know what is the lateral surface area of a cuboid. So it is 2h multiplied by L plus B. And what is the area of the ceiling? So if the room is in cuboid shape like this, right, so this is the top part. So the top part is of what shape? It is of rectangular shape. And what are the measurements of this top surface? So this is breadth and this is length. So this is L and this is B. So what is the area of the top part? It is L into B, right. तो L into B हमने लिख दिया. Now from here I have put all the L, B and H values here. और वहाँ पे values put किया हमने. तो H का value 3, L का value 5 and B का value 4. ये हमने सारे respective values को put कर दिया. Then we have just solved it by using the BODMAS rule. So 2 into 3, 5 plus 4 is 9 I have written over here. And 5 into 4, 20 I have written over here. Now these 3 things are in the multiplication form. So 2 into 3 into 9. So 2 3 is 6, 6 9 is 54. So 54 plus 20 is what, 74 meter square. That means जो टोटल एरिया है जो हमें वाइट वॉश करवाना है वो अब हमने फाइंड आउट कर लिया. व्हाट इज़ दैट टोटल एरिया, 74 मीटर स्क्वायर. अब अगर टोटल एरिया निकाल लिया हमने तो पर मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है अगर वो हमें पता है, टोटल एरिया हमें पता है, तो टोटल कॉस्ट कितना हमें आने वाला है दैट वी कैन ईजिली कंप्यूट. How? So cost of whitewashing 1 meter square area is, if it is rupees 7.50, so total cost is what? Just multiply that total area with the per unit cost. That means 74 into 7.50. तो जब आप multiply करेंगे, so what you will get? You will get the resultant rupees 555.
5. Clear? So this is my last answer line क्योंकि यही हमें find out करना था. So don't forget to write the answer line. So my answer line is the required cost of whitewashing is what? Rupees 555. I hope you got this question. Now let's move on the next question. Question number 3.